Non-banking financial companies or non-banking financial institutions are actually those financial institutions which are not regulated like banks or regulated banks, but they are involved in financial activities, that is, in borrowing and lending and providing credit. There are different kinds of non banking finances which are available in an economy. For example, these non banking financial companies also provide some commercial loans. But these commercial loans are a little different from the loans which are provided by the banks. I would say that, in simple words, a commercial loan by a commercial bank is a more regulated loan, यानी जिसके बारे में कवायद व ज़वाबित ज़्यादा डिटेल में मौजूद होते हैं as compared to a commercial lending by a non-banking financial institution. Non-banking financial companies also provide money or financing for social and community benefits. So they would also give loans which may be sort of for the development of the area or for the betterment of some part of the economy. Non-banking financial institutions also get involved in joint ventures. A joint venture is actually an agreement in which two parties join hands for a particular project. एक खास काम को मुकम्मल करने के लिए, खास काम को करने के लिए दो ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर ये तय करती हैं कि हम इसको शुरू और ख़त्म करेंगे, और उसके अंदर दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को फाइनेंशियल बेनिफिट होता है. सो एनबीएफसीज इसके अंदर भी इन्वॉल्व होती हैं. इसी तरह जॉइंट वेंचर तो एक ख़ास वक्त से शुरू होकर एक ख़ास वक्त पे ख़त्म हो जाता है, लेकिन ऐसी ही पार्टनरशिप्स जिसके अंदर दो पार्टीज़ आपस में मिलकर ऐसा बिजनेस करती हैं कि जिससे वो प्रॉफिट अर्न कर सकें, तो ऐसी पार्टनरशिप्स भी एनबीएफसीज इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं. एनबीएफसीज आर ऑल्सो involved in factoring. We discussed it earlier in our lecture related to receivables management, where we said that a factor is an organization which assumes the job of collecting the amount of receivables from different people. So non-banking finance companies are also factors. They also provide equity financing, यानी ये पैसा इस बुनियाद पर भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को देती हैं कि उस पैसे को इन्वेस्ट करने से जो प्रॉफिट आएगा उसके अंदर वो शेयर करेंगे. एनबीएफसीज क्राउड फंडिंग भी अरेंज करती हैं, यानी बहुत सी जगह से मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस या लोगों से पैसा लेकर और उसको आगे लेंड किया जाता है फॉर द पर्पस, जिसके अंदर एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स और न्यू स्टार्टअप्स जो हैं वो एक प्राइम रोल प्ले करते हैं कि उनके लिए ये फाइनेंसिंग बहुत यूज़फुल होती है. इसके अलावा एनबीएफसीज गवर्नमेंट फंडिंग में भी इन्वॉल्व हैं. एनबीएफसीज की शक्लें क्या हैं, मुख्तलिफ फॉर्म्स क्या हैं, यानी एनबीएफसीज के क्या नाम होंगे, किस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होंगी. सो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और इंस्टीट्यूशंस की बहुत सी शक्लें हो सकती हैं. फॉर एग्जांपल डीएफआईज, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन भी एक्चुअली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की ही एक किस्म है जिसके बारे में हमने पिछली लेक्चर्स में तफसील से बात की. इंश्योरेंस कंपनीज विच प्ले अ की रोल इन अ फाइनेंशियल एनवायरनमेंट आर आल्सो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिनका काम ये है कि किसी भी इदारे के अंदर अगर लॉस हो जाए बिकॉज ऑफ अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स, तो उस लॉस को पूरा करने के लिए, उसमें सपोर्ट करने के लिए उसकी इंश्योरेंस की जाती है और उसके अंदर वो अपना रोल प्ले करती हैं. सो इंश्योरेंस इज़ एवरीवेयर. इंश्योरेंस जो है वो इंडिविजुअल से लेकर एसेट से लेकर करंट फिक्स्ड एसेट्स हर चीज़ के अंदर मौजूद है, और एनबीएफसीज के अंदर इन इंश्योरेंस कंपनीज का रोल जो है वो बहुत अहम है. इसी तरह देर आर लीजिंग कंपनीज. लीजिंग इज़ ऑल्सो अ बिजनेस इन विच फाइनेंसिंग इज़ प्रोवाइडेड बट इन अ डिफरेंट मैनर, जहाँ पर एक एसेट जो कि एक बिजनेस को रिक्वायर्ड है उसको ख़रीद के दे दिया जाता है और वो एसेट उसको किराए पे दे दिया जाता है. एंड इन रिटर्न द बिजनेस हैज़ टू पे
rent of that leased asset. اس طرح ایک فائنینسنگ ہے جو کہ پرووائڈ کی جاتی ہے ان دا فارم آف این ایسٹ اینڈ دا رینٹ از کلیکٹڈ. اور لیزنگ کی مختلف شکلیں ہیں جن کو ہم آپریٹنگ لیز اور فائنینشیل یا کیپٹل لیز کہتے ہیں. دین دیر آر مداربہ کمپنیز. مداربہ کمپنیز کا رول پاکستان کے اندر اس وقت شروع ہوا جب ہماری اس فائنینشیل سسٹم کو اسلامک فائنینشیل سسٹم کے اندر ڈھالنے کی کوشش شروع ہوئی اور بہت سی مداربہ کمپنیز اس کے اندر بنائی گئیں. مداربہ از این اگریمنٹ بٹوین ٹو پرسنز اور ٹو آرگنائزیشنز ویئر ون کنٹریبیوٹس ود فائنینسز اینڈ ادر کنٹریبیوٹس ود ایفرٹس اینڈ اسکل, اور وہ پروفٹ کو آپس میں شیئر کرتے ہیں. تو اس طرح کی بہت سی کمپنیز جو ہے پاکستان میں موجود ہیں اور ان کو ہم مداربہ کمپنیز کہتے ہیں which are again NBFCs. Then there are venture capital companies, یعنی وہ کمپنیز جو کسی خاص بزنس کے لیے کسی خاص وینچر کے لیے فنڈز پرووائڈ کرتی ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کے سامنے وہ بزنس پروپوزل پیش کیا جاتا ہے اور اگر وہ سمجھتی ہیں کہ اس کے اندر پیسہ لگانے سے منافع ہوگا تو وہ اس بزنس کے اندر فائنینسنگ کرتی ہیں. سو دے آر آلسو نان بینکنگ فائنینس انسٹیٹیوشنز. دیر آر کرنسی ایکسچینجز کہ جہاں پر آپ اپنے مختلف طرح کی کرنسیز لے سکتے ہیں. اینڈ دین دیر آر مائکرو لون پرووائڈرز جو کہ تھوڑے اماؤنٹ کے لونز لوگوں کی ضرورت کے لیے دیتے ہیں.